हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज के बारे में। ये जो कंडीशन होती है ये तब मेनली कॉज होती है जब हमारा बीपी जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है, मतलब बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसको हम लोग ICH के नाम से भी जानते हैं, इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज। It will be caused by bleeding within the brain tissue, also form of stroke, which will help to form a life threatening condition. Stroke means what? Whenever oxygen and blood supply can't go or reach to the brain, that condition is known as stroke. नेक्स्ट, ICH इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय हाइपरटेंशन, जैसा मैंने भी बताया कि बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, आर्टीरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस और हेड ट्रॉमा की वजह से भी ये कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, रिमूविंग द ब्लड क्लॉट एंड रिलीविंग द प्रेशर ऑन द ब्रेन। इसका जो ट्रीटमेंट है दैट कैन फोकस ऑन जस्ट स्टॉप द ब्लीडिंग, जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहे हैं ब्लड ब्रेन में वो रिमूव हो जाए, एंड द प्रेशर ऑफ द ब्रेन दैट कॉजेज बिकॉज ऑफ BP. What is an intracerebral hemorrhage? Tiny arteries, very small arteries, bring blood to areas deep inside the brain, and high BP can cause these tiny walled arteries to rupture, releasing blood into the brain tissue, and enclosed within the rapidly form of a rigid skull. Clotted blood and build the increases pressure that can crush the brain against the bone. That means that कि intracerebral hemorrhage, that condition whenever arteries form the blood inside the brain, and because of high blood pressure wall will be rupture or a breakdown of wall, then it will releases into the brain tissue, blood releases into the brain tissue, and that will enclosed and rupture the brain against the bone or crush the bone. अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स दैट कैन कॉजेज और फॉर्म इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज. It will be symptoms like headache, nausea and vomiting. Nausea, which means that sensation of vomiting. Vomiting means vomiting. Letharginess, थकान हो जाती है, confusion cause होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, temporary loss of vision, सीजर्स फॉर्म होने लगते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है, एंड सडन वीकनेस कॉज होने लगती है. दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स दैट कैन कॉज इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज. अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ की कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. तो हाइपरटेंशन जो होता है दैट मीन्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में कॉज टिनी आर्टरीज टू बर्स्ट इनसाइड द ब्रेन और अ नॉर्मल प्रेशर which will 120/80 or 130/70. Next one, blood thinners. It will also form or a cause of a blood thinners. That means drugs such as coumadin, heparin and warfarin. These are the clotting agents used to prevent clots in anti-clotting agents in heart, and stroke conditions may cause ICH. Next one, head trauma. Head trauma, fractures to the skull and penetrating wounds can damage in artery and causes bleeding. Then bleeding disorders, hemophilia, sickle cell anemia, DIC, thrombocytopenia, that causes a bleeding disorders. Next one, amyloid angiopathy, a building of protein within the walls of arteries. And drug usage, alcohol, cocaine and other drug can cause ICH, that means intracerebral hemorrhage. And spontaneous sudden ICH by unknown cause की वजह से भी हो सकता है. And last one, we just discuss about the what are the diagnoses that can diagnose intracerebral hemorrhage. Computed tomography, that means CT scan,
एंजियोग्राम एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। ये इन डायग्नोज के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट कैन कॉज और पेशेंट कैन हैविंग अ डिजीज़ लाइक इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक माई इन्फॉर्मेशन, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड comment on my channel. Thank you.